नमस्कार। मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जिंदल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल रिसर्च फ्रॉम मुंबई। So caveats, limitations, and disclaimers are a necessary part of evaluation. You cannot do the 100% capturing of the data or the circumstances, but something you have to assume, somewhere you have to limit yourself, and for somewhere you have to disclaim that it was not possible or it is somewhere difficult to report at these circumstances. So what things we have to keep in mind? So first of all, what are the caveats? Caveats are warning and cautions to the client and user of service. Limitation is the restriction on the scope of the RV's work, including inspection or investigation of the data available for analysis that may be present and known to the RV at the outset of the valuation engagement or that may arise during the course of valuation. So, limitation is on the scope of work of the RV that you cannot, you should not investigate this or you should not. So, it will little bit compromise on the valuation. Disclaimer is a statement intended to specify or delimit the scope of rights and obligations that may be exercised and enforced by the parties in a legally recognized relationship. So, what is the scope in which the valuer has to work? It is a statement denying responsibility intended to prevent civil liability arising for a particular act or omission. तो ये अपनी सिविल लाइबिलिटी को डिनाई करने का कार्य करता है, उससे बचाने का काम करता है। तो क्या क्या सोचना चाहिए? सो यदि एनी कैविएट्स, लिमिटेशन or other disclaimers to the report must be clearly stated with appropriate specificity. तो आपको यदि कोई नजर आ रहा है कोई कैविएट, लिमिटेशन और डिस्क्लेमर, उसको इनएवरिएबली आप अपनी रिपोर्ट में शामिल करें, उसके ऊपर जोर दें, स्पेसिफिकेशंस करें. While preparing the valuation report, RV shall not disclaim liability for his expertise. तो जो उसने काम किया उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई यदि ऐसा होगा तो वैसा. तो जो उसने किया उसके लिए तो उसको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा. एंड डिनाई हिज ड्यूटी ऑफ ड्यू केयर, ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ड्यू केयर नहीं लिया. एक जनरल इंटेलिजेंस के साथ काम नहीं किया, एक जनरल कॉमन सेंस के साथ काम नहीं किया, इस चीज को डिस्क्लेम नहीं कर सकता. RV shall prepare the valuation report of the company based on information and record concerned as provided by the management. Definitely the company is of the management, उनके पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, वही इंफॉर्मेशन देते हैं. So management remains liable for the correctness and veracity of the thereof. However, valuer should inspect, corroborate, or due diligence of the information should be done by the valuer. He should not keep mum on the information which is provided by the management. Some common sense or common due diligence should be applied on that or comparable from the data of the industries. So RV has the right to demand relevant information and the basis of the projections before commenting thereon. तो क्या बेसिस है? लिक्विडेशन बेसिस है, गोइंग कंसर्न बेसिस है, स्ट्रेस एसेट है बेसिस, या टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है. बट what is the basis? The duty of the entity being valued to be fair and to provide accurate information about the subject asset.
तो जो एंटिटी वैल्यू अपनी बढ़िया कराना, अगर आप डॉक्टर से कुछ चीजें छुपाएंगे तो बीमारी जाएगी। तो यदि वैल्यूअर ठीक कराना है, वैल्यूएशन ठीक कराना है एंटिटी को, तो सब इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी हो। RBI can state that assumptions are statement of fact provided by the company and not generated by the RBI। RBI ये assumption लेकर के चल सकता है, स्टेट कर सकता है कि ये इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी। However, he has corroborated the information। This warning statement is necessary as data provided by the company and is often constituted to be a part of the valuation। क्योंकि ये सारा डाटा वैल्यूएशन रिपोर्ट का रहता है, अगर आपका प्रोजेक्शंस है तो भी वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है। उसको डीसीएफ आपने किस मेथड से किया तो वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है। तो ये फैक्ट में मेंशन करना बहुत जरूरी है। RBI has to carry out sufficient inspection, inquiries, computations, and analysis to ensure that valuation is properly supported। All valuations are carried out in sufficient detail to comply with the requirements of due care। कि आपने उन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, एरिया के मुताबिक, रीजन के मुताबिक, कंट्री के मुताबिक, पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक प्रॉपर ड्यू केयर किया है। However, reasonably expected that circumstances may place certain limitations regarding access to information or time available। तो कितना टाइम अवेलेबल है और किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, उन सब चीजों के ऊपर थोड़ी लिमिटेशन रहती हैं और उसके बारे में एजम्पशन लिया जा सकता है। One has to recognize limitations of time and context in the evaluation as it is cannot constrain business need and flexibility। सो टाइम का कंस्ट्रेंट भी रहता है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, उस समय में आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं, वह करना है। The effort, diligence, and level of expertise applied by relevant registered value need to be stated in the valuation। आपने किस दिशा में काम किया, कहाँ-कहाँ से जुटाने की कोशिश की, क्या आपने ड्यू डिलिजेंस किया, कितनी ड्यू केयर रखी, कितना आपने किन चीजों का ध्यान दिया, तो ये सब आप वैल्यूएशन रिपोर्ट में करेंगे तो किसी को भी आपके ऊपर क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैल्यूएशन इज ए वेरी बिग सब्जेक्ट, इट्स ए ओशन। जितना पढ़ो उतना कम रहता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, तो तभी हम थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज होने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। सो नमस्कार।